Hello everyone. So I'm going to bring today a mic for our recording. Okay. ये है Lekato mic. This is the one. Okay. And इसे मैं unbox करूँगा. And then I'll show you like how exactly it performs when I'm using for recording. So right now जो आप audio सुन रहे हो, that's coming directly from my phone. मैं एक सैम्पल आप ये जो सुन रहे हो उसके बाद एक सैम्पल हम देखेंगे व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग दिस माइक. ओके, सो फर्स्ट लेट्स अनबॉक्स दिस. ओके, एंड देन उसके बाद इसे यूज़ करके देखते हैं. सो द की फीचर्स ऑफ दिस इज लाइक HD साउंड क्वालिटी, 30 मीटर का रेंज है. इसके साथ एक रिसीवर आता है और दो ट्रांसमीटर आते हैं जिसके थ्रू 2 माइक आते हैं. ओके, सो पॉसिबिलिटीज द USB टाइप C वन. ओके, यू कैन सी फ्रॉम द दिस द वन. सो उसके साथ आप एनी टाइप C मोबाइल के साथ यूज़ कर सकते हो. ओके, क्विकली glimpsing you through the features which are mentioned on the box. You can see the other stuff. One thing interesting I found today is this QR code on the box. This QR code on the box. So basically ये I think Amazon के थ्रू है. Amazon का एक ट्रांसपेरेंसी ऐप है, उसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो कि whether the product is genuine or not. So I'll put a video of that as well, like how exactly you just need to scan via this transparency apps. I think this is the way transparency app is there. So this is the transparency app, Amazon की तरफ से है. फर्स्ट आपको ये इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल ऐप पे. उसके बाद आपको यू हैव टू ओपन इट. वंस यू ओपन इट, लेट्स गो बैक. ये बाय डिफ़ॉल्ट स्कैनर आएगा एंड उसमें लेट्स सपोज आई विल स्कैन दिस. This shows that okay, the verified product. Your product is what the product is, like 4-level noise cancellation, blah blah blah. 30 hours battery, 30 meter range, all those sort of thing. प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल और रहता है इसमें. 4 level of noise cancellation, so स्लाइड्स लेके सुपर तक है. इट कैन कैंसिल द नॉइज अप टू 90 dB. सो वो सब है. देन some instruction. Then there are 3 modes as well, like एक मेल हाई हेवी वॉइस करने के लिए एक मेल का वॉइस है, एक फीमेल का वॉइस के लिए गॉडेस वॉइस है. दैट्स मोर श्रिलिंग, दैट्स मोर गर्लिश. And then your original voice is there, so you can modify the voice as well. Dual channel microphones है, तो of course you can have 2 transmitter 1 receiver. So 2 person, अगर in case you are interviewing someone, in case you are talking to someone, if multiple people are talking, you can do those kind of recordings as well. Then of course like 360 omnidirectional pickup means like 360 sound pickup है, तो आप कहीं पे हो within 30 meters it should work. 30 hours battery life, compatible with iOS, Android as well. 30 meter wireless range is there. All those sort of things you will be get to know. The 6 hours का continuous uses दिखा रहा था Amazon पे, and it takes charging maybe around 30 hours का continuous uses दिखा रहा था and 6 hours of charging. Okay, of course this is again a made in China product. Okay, but imported in India by some players. But yeah, Lekato as a brand is like quite a big brand in terms of like guitar related accessories. वहाँ पे वायरलेस का यूज़ होता है, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में Lekato is a good name. Okay, and that's why after searching on Amazon I thought like okay, let's finalize this. Also मेजर रीज़न क्या था कि मुझे नॉइस कैंसलेशन चाहिए था. अच्छा, तो दिस वन इज़ हैविंग ENC, some 3 or 4 levels ENC is there, so that's the reason मैंने इसे परचेज़ किया. Amazon पे I got it around after discount around somewhere close to 2350 rupees. So let's see, let's unbox this and see. Let's unbox it.
This is your case. Yeah, it's quite small, quite tiny, and quite good as well. And then you do have some instructions leaflet. You do have some cables. So ये Type C cable है, Type C to USB cable है. You can see this for charging. And then you also have, in case you are using old iPhones, then you also have the lightning one inside this. So, and this is how it is. Okay, so you have very small, very gentle. This is your this is the receiver. Quite small it is. इसके साथ आपका साथ में आप मोबाइल ये मोबाइल में जाएगा, and then you can charge it as well using this point at the same time in case it is needed. And then you do have two clip-on, quite tiny, quite nice, gentle ones for this transmitter for recording, and this one as well. So these are the two, which is here. Not sure if it is visible to you. Same thing. There's one more. Quite nice form factor. ऊपर से ये covered है, so that in case there is wind, something like that, it's not causing a lot of noise coming over here. Okay, so अभी जो आप voice सुन रहे हो, that is coming through my mobile phone audio. Let me put this into the mobile. Let me start this, and उसके बाद हम इसे record करते हैं how exactly the audio. This is Lekato model number LWM05. So ये receiver है, सीधे इसे insert करना है, and after that I think this is the power on switch for the receiver, and then you do have two microphones. Okay, and इनको भी इधर से power on करना है. Okay, and there will be 4 levels of noise cancellation. So possibly इसी को double click करने पे या double press करने पे वो different levels of noise cancellation activate होंगे. And this is the second one, same thing, you need to do this. The good thing is it's quite small, काफ़ी छोटा है, so which is what I liked really lot. And also the casing is quite small as well, almost like a very small iPod का earphone जो रहता है अपना AirPod, उसके तरह. And this is quite good. इसके भी charging आप कर सकते हो, directly यहाँ से charging कर सकते हो. Okay, so whenever you do need to charge it, you can use this. Okay, so now ये जो आप audio सुन रहे हो, this is coming with the microphone. Okay, mind you अभी noise cancellation activate नहीं किया because it is blinking blue, you can see. Okay, same thing, जब ये blue blink करेगा तो इसका मतलब it is looking for like blink कर रहा है, तो इसका मतलब it's not connected to the receiver. The moment it is stable blue, this means it's connected to the receiver that I have put. सेम थिंग आपका रिसीवर पे भी होता है. लाइक आप जैसे ही उसे डालते हो मोबाइल के यूएसबी पोर्ट पे, वो ब्लू ब्लिंक करता रहेगा. ओके, दिस मीन्स इट इज़ लुकिंग फॉर अ माइक्रोफोन. and the moment you switch it on, like I have to press this button for 2 seconds and then automatically activate होता है और immediately connect होता है, immediately connect हो जाता है उससे. तो blue light दोनों stable हो गए. Now what you are hearing right now, this is without noise cancellation in the empty and quiet room. Fan नहीं चल रहा है अभी. Let me put on the fan and let's see how exactly it behaves with the microphone on. Now अभी रूम में fan full flow पे चल रहा है. मैं इसे अपने obvious जगह पे लगा लेता हूँ. Okay, so now I have put it over here. अभी तक मैंने noise cancellation activate नहीं किया है. It's still blue. You can see it is still blue. So ये noise cancellation activate नहीं. This is the basic, like the recording has started. It's connected with the microphone. Fan चल रहा है रूम में. You might have been still hearing lot of noise. Now अब इसको क्या करना है, मुझे noise cancellation activate करना है. Noise cancellation activate करने के लिए ये जो बटन है उसको एक बार प्रेस करना है. Where is the button? Okay, now it is on the right side of mine. So मैं इसको एक बार प्रेस किया. You can see it has turned to green, right? It has turned to green. Same time, the moment इसको मैंने प्रेस किया,
वहाँ पे भी ग्रीन, रिसीवर में भी ग्रीन बटन, ग्रीन लाइट जलने लगी है. ओके, विच मीन्स नॉइज कैंसलेशन हैज एक्टिवेटेड, एंड दिस इज द level 1 of noise cancellation. By default level 1 of noise cancellation in this microphone. फैन स्टिल फुल फ्लो पे चल रहा है. ओके, आई होप आपको थोड़ा डिफरेंस आया होगा. ओके, नाउ अब आपको और, एज आई मेंशन टू यू, दिस इज लाइक अप टू 90 dB का नॉइज कैंसलेशन है इसमें, विच विद 4 levels. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू चेंज द लेवल ऑफ नॉइज कैंसलेशन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ नॉइज कैंसलेशन, आपको रिसीवर पे कंट्रोल है, इसमें माइक्रोफोन में कंट्रोल नहीं है. देयर आर सर्टेन थोड़े से और महंगे या थोड़े डिफरेंट डिवाइसेस में, इवन मैंने लेकाटो का भी देखा, इससे कम वाले रेंज में भी एक में है, इसी में कंट्रोल है, यू कैन चेंज द नॉइज cancellation level. But in this case, this is much more smaller and simpler. Even the receiver भी जो है वो काफी छोटा है compared to others which थोड़े से बड़े होते हैं. तो I like this one. तो इसमें जो कंट्रोल है नॉइज कैंसलेशन इंक्रीज करने का, वो रिसीवर एंड पे है. तो I'll press once at the receiver end. वहां पे जो ग्रीन लाइट है वो 2 बार ब्लिंक करनी चाहिए. Oh no, it has blinked once. It means now the level 2 of noise cancellation has activated. Okay, this is the level 2 of noise cancellation. थोड़ा सा आपको better शायद लग रहा होगा. Okay, now let me press it one more time so that the level 3 of noise cancellation get activated. अब वो लाइट 2 बार ब्लिंक की है, रिसीवर पे 2 बार ब्लिंक की है. दिस मीन्स you are on the level 3 of noise cancellation. लेवल 3 ऑफ नॉइज कैंसलेशन थोड़ा इवन बेटर हो गया होगा, थोड़ा फैन का साउंड और कम हो गया होगा. ओके, एंड दिस बट दिस इज स्टिल नॉट द हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉइज कैंसलेशन. अब मैं नेक्स्ट लेवल जो हाईएस्ट लेवल है उस पे जा रहा हूँ. ओके, नाउ 3 times it has blinked green, and then this is the highest level of noise cancellation that is available through this microphone. I hope this is working well. I tried it and it performed well so far. Okay. अभी मैं इसका डिस्टेंस चेक करूंगा, ये कितने डिस्टेंस तक वर्क करता है. मेरे घर में अराउंड 20 फीट तक का डिस्टेंस तो है. बाकी आउटडोर के लिए फिर आउटडोर जाऊंगा कभी तो टेस्ट करूंगा. ओके, अभी मैं जिस रूम में हूँ वहाँ पे काफ़ी फैन चल रहा है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन है और मैं वॉक करते जा रहा हूँ. लेट्स सी, आई होप सो रिकॉर्डिंग इज स्टिल गेटिंग कैप्चर्ड. ओके, सो रिकॉर्डिंग इज स्टिल गेटिंग कैप्चर्ड एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे भी फैन चल रहे हैं, उस रूम से फैन की आवाज़ आ रही है. मैं बाहर जा रहा हूँ. बाहर में अभी मैं आपको ये है ऑडियो बाहर से. ओके, बाहर से मैं आपको ये दिखाऊंगा. एक पॉसिबली देखते हैं इसका नॉइज कैंसल विंड चाइम के साथ कैसा नॉइज कैंसलेशन काम करता है इसका. ओके, ह्यूज विंड चाइम ओवर हियर, काफ़ी साउंड है यहाँ पे, बट आई होप सो इट हैज़ परफॉर्म्ड वेल. ओके, in this situation. Now talking about like some of the complications which happened. जब मैंने what I was expecting कि जैसे ही मैं रिसीवर उधर लगाऊंगा and the moment I'll put it, activate this microphone, it will start recording, but that doesn't happen. It doesn't happen that way. What needs to be done is that like पहले तो by default कैमरा ऐप है मेरे पास. सैमसंग फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा एज ऑफ नाउ, एंड उसमें आपको प्रो मोड में जाके ऑडियो सोर्स USB सेलेक्ट करना पड़ता है. बाय डिफॉल्ट ओमनी माइक रहता है, मेरे केस में ओमनी माइक. ओके, सो वो USB आपको सेलेक्ट करना पड़ता है. ऑडियो सोर्स यू हैव टू सेलेक्ट द एक्सटर्नल माइक और USB. ओके, बाय डिफॉल्ट इट वाज नॉट पिकिंग माय केस. ओके, सो व्हाट आई डिड इज दैट इन द इंस्ट्रक्शन मैनुअल उन्होंने लिखा था कि अगर बाय डिफॉल्ट जो कैमरा ऐप है वो वर्क नहीं करता है, in that case what you can do is that you can download the open camera app from app store. That's the open source app. उसको मैंने इंस्टॉल किया. ओके, हार्डली 2-4 MB का है, वो इंस्टॉल किया मैंने, and that gave me in the settings, that gave me option of like audio source. From audio source I selected external mic. Okay, on the open camera app, and उसके बाद मैंने एक रिकॉर्डिंग की उससे, and that's got connected. In this case it was working fine with this mic. Then again I came back to the Samsung original camera app and then stock camera app, और उसमें by default it has picked the USB. Now what is happening, like every time the moment I'm plugging it in, the moment receiver को मैं डाल रहा हूँ USB पोर्ट में, ऑटोमेटिकली ये रिकॉग्नाइज कर ले रहा है Samsung कैमरा ऐप भी कि दो दिस इज USB बेस्ड और एक्सटर्नल माइक बेस्ड रिकॉर्डिंग इज एक्टिवेटेड, एंड दैट्स वेयर द वॉइस इज गेटिंग कैप्चर्ड. तो विच इज फाइन, बट एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, द मोमेंट अगर आपने USB लगा दिया है उसमें USB पोर्ट में, ओके, और उसके बाद आपका, बिकॉज द मोमेंट यू पुट इट USB इट स्टार्ट्स लुकिंग फॉर लाइक द व्हाइल वीडियो रिकॉर्डिंग इज ऑन, और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ऑन करना है या नहीं करना है. अगर आपने USB उसमें लगा दिया है, बाय डिफॉल्ट मोबाइल विल रिकॉग्नाइज, द कैमरा ऐप विल रिकॉग्नाइज दैट ऑडियो सोर्स शुड बी द एक्सटर्नल माइक,
एंड इन दैट केस अगर आपने इस माइक को ऑन नहीं किया, इधर ब्लू और ग्रीन लाइट ऑन नहीं किया, देन इन दैट केस कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगी, इट्स जस्ट द ब्लैंक, ओके, इट्स जस्ट द वीडियो गेट्स कैप्चर्ड, ओके, सो बी केयरफुल विद दिस, ऐसा नहीं कि आप कुछ क्रूशियल मोमेंट में मिस कर जाओ, ओके, सो दैट्स वन थिंग आई पॉसिबली फेल्ट कि थोड़ा सा शायद इसमें इधर से मोबाइल में होना चाहिए कि इवन दो इफ द रिसीवर इज नॉट वर्किंग, ओके, इवन दो इट इज नॉट कनेक्टेड, आइडियली इट शुड मोबाइल रिकॉर्डिंग से ही मोबाइल का जो माइक्रोफोन है उसी से रिकॉर्ड ऑडियो सोर्स रिकॉर्ड करते रहना चाहिए, एंड द मोमेंट द एक्सटर्नल यूएसबी सोर्स इज एक्सटर्नल माइक इज एक्टिवेटेड, connected and activated, then it should automatically switch to the external source as well, okay, that switching is not happening seamlessly, so you have to be very careful, like if you have put the receiver into the phone, then ideally this one should also be on, then only audio will be getting recorded, if no, then there will be no audio recorded.